everyone, welcome and welcome back to the channel again. First of all, thank you so much for still staying here and still keeping up with me from a very long time. So, without any delay, I would just say that we should start with the question that is very awaited. So, the question is from Jayashri Devedi and she has asked a very long question. I'm just reading it out. So, the question is कि she has scored some marks in 2025 का paper एंड शी हैज़ आस्क्ड कि PNST 2022 का रिज़ल्ट नहीं आया है, 24 की काउंसलिंग इतनी ज़्यादा लेट हुई है, कुछ नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द हो गई थी, नर्सिंग कॉलेजेस के एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे शायद, तो उसे क्लियर नहीं है कि शी सेइंग मुझे क्लियर नहीं है ऐसा सभी कॉलेजेस में हुआ था या फिर किसी एक दो में। आप GMC भोपाल के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा वहाँ के एग्ज़ाम्स, लैब्स, एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। आप हो सकता है तो एक वीडियो भी बना दो। This is what she has asked, and then she has also said that she has given some other examinations also, so and also asked कि PNST से कॉलेज लेना वर्थ इट होगा या नहीं। आई मीन मिसमैनेजमेंट समझ आ रहा है जो रिसेंट ईयर्स में हुआ है उससे। आप प्लीज़ डिटेल में बता सकते हो क्या कि कैसा रहता है, क्या है सब कुछ। And yeah, I promised her to reply on this video. She has asked this comment into this video. You can check the full comment if you want. So the thing that I would say is all these questions that you have asked Jayashri are very common and these are the questions जो आप लोग सब वीडियो देख रहे हैं उनके मन में भी होगा। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं थ्रू रिसेंट ईयर। सो द एडमिशन ऑफ द बैच मीन्स जिस बैच में मैंने एडमिशन लिया था, सो बेसिकली जिस बैच में मैंने एडमिशन लिया था इट वॉज 2020 का बैच। ओके, जस्ट आफ्टर कोरोना 20 में स्टार्ट हुआ था। इसी के बाद जो फर्स्ट एग्ज़ाम था PNST का वो हमारे बैच ने दिया था। वी गेव द एग्ज़ाम, वी स्कोर्ड वेरी वेल एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सारे एग्ज़ाम का प्रोसीजर जो था वो फॉलो हुआ। वी वेटेड फॉर लाइक 6 months टू गेट द रिज़ल्ट। जून में हमारा रिज़ल्ट आया एंड जुलाई में हमारी ज्वाइनिंग थी। एवरीथिंग वॉज गोइंग सो वेल, एवरीथिंग वॉज वर्किंग सो वेल। स्टार्टिंग में जुलाई में बिकॉज इट वॉज स्टिल कोरोना एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, सो दे हैव आस्क्ड अस कि सिर्फ एडमिशन ले लो, उसके बाद वील बी सून स्टार्टिंग द कॉलेज क्लासेज एंड ऑल। फिर उसके बाद में व्हाट दे हैव सेड इज़ कि स्टार्टिंग में लेट्स डू सम ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू स्टूडेंट्स एज you will be new here, so coming in the corona everything, we also understood, we started with the online classes and some of the professors and teachers used to take it till around November last to December starting we did it. We also gave the 3 month के बाद जो एग्ज़ाम होता है वो जस्ट अ ऑनलाइन टेस्ट बेसिस। इट इज़ लाइक न्यू कमर्स का, मतलब फर्स्ट ईयर की जो जॉइनीज होते हैं उनका न्यू टेस्ट होता है एंड उसके बाद ही उनको मीन्स सारे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हटाए जाते हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट एग्ज़ाम, अभी पर्पस ऑफ दैट एग्ज़ाम, सॉरी। उसके बाद नवंबर लास्ट में हम लोगों ने बोलना चालू कर दिया था कि नो वी नीड क्लासेस लाइव और हमें क्लिनिकल स्टार्ट करने because it is getting very late. Sorry for this, I think I am getting cold, I will have cold, so इसलिए वॉइस थोड़ी अजीब आ रही है। उसके बाद व्हाट दे हैव डन इज़ कि हमारी नेक्स्ट डे से क्लिनिकल्स का हमें समझाया कि ये बैचेस हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल के ब्लॉक्स हैं, इसमें आप सब लोग करोगे, चीज़ें रहेंगी। स्टार्टिंग में एवरी पर्सन विल डू वन थिंग एंड एवरी teacher and everyone will ask you to do one thing because you don't know anything. So we also understood कि हमें अभी और कुछ नहीं पता है, शायद इसलिए they are asking only for the bed making procedure. Bed making is कि जितने हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं उन सभी में जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स को थोड़े टाइम के लिए हटवा के उनको, अगर वो मूव नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सपोर्ट दे के आपको बेड्स को क्लीन करना है। वो बेडशीट हटाएंगे आप, वो उस बेडशीट की जगह न्यू बेडशीट बिछाएंगे, सारा जो वहाँ बेडशीट के ऊपर कुछ मेस्ड अप है तो उन चीज़ों को हटाएंगे, सॉर्ट करेंगे, ब्लैंकेट को फोल्ड करेंगे, बेडशीट में नॉट्स लगाएंगे, वो पिलो कवर ठीक करेंगे एंड दिस इज़ व्हाट द बेड मेकिंग प्रोसीजर इज़। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, patients need it of course, but I would say that I don't used to like it so much, but I don't used to like it because I felt like this is not the thing that nurses should be doing. In the older times it was okay when the ward boys and जो और junior members होते हैं
इन द टीम जब वो लोग नहीं रहते थे. सो फॉर द इनिशियल 1 year दे विल जस्ट लेट यू डू दीज थिंग्स, आओ डेली क्लिनिकल्स में, एंड देन यू विल बी डूइंग द बेड मेकिंग फॉर like starting ke 1-2 hours. You will be just cleaning the beds and removing the dirty bed sheets, putting them beside the bed or to the main source जहाँ से bed sheet धुलने जाएंगी. एंड देन यू विल ट्राई कि वहाँ पेशेंट्स की जो भी फाइल है उनको आप देखो, समझने की कोशिश करो. स्टार्टिंग में सबको इंटरेस्ट होता है तो वी टेंड टू डू इट यूजुअली. फिर उसके बाद में व्हाट हैपेंड, स्लोली हमारी उस टाइम पे बहुत कम क्लासेस होती थी. सो इट वॉज लाइक कि बस बैठे रहो क्लास में, एंड नॉट अ वेरी काइंड ऑफ स्टूडियस इन्वायरमेंट वॉज देयर. उसके बाद स्टार्टिंग में देल स्लोली आस्क यू कि बताएंगी, नर्सेज भी बताएंगी, हेल्प करने को ट्राई करेंगी कि ये प्रोसीजर्स होते हैं क्या, ये ऐसे लगाते हैं, इंजेक्शन ऐसे करते हैं. तो नर्सेज विल टीच यू बट नॉट इन द टर्म ऑफ प्रोसीजर्स कि ये स्टेप के बाद ये ऐसा ऐसा होता है. दे विल जस्ट टीच यू अ क्विक वे विच कैन लीड यू टू हेल्प देम in a shorter period of time. Slowly what will happen is they'll not let you stand there and read the files. They'll just ask you to just do their work, what are their things and what are the things that you can finish quickly and help them. So this is I am telling you all these things because this is the scenario that happens. Slowly what you will find is you are just involved in physical things, not things which require knowledge. Means you will be asking to have bed making procedure. It is an important procedure in nursing foundation book for first year, but it is not the only procedure that should be like that you should be doing always, because it is good, like you should know what is bed making, what is mitten formation, what are the things that are included in bed making and everything like that. But as all the junior members of the team are there, they should be doing it, what I felt. आफ्टर दैट इसके अलावा जो क्लिनिकल्स हैं वो आपको डेली जाना पड़ता है फ्रॉम 8 to 12 या 8 to 1. दिस इज़ द टाइम दैट दे टेक. उसके बाद में क्लिनिकल्स में स्लोली व्हेन यू विल कम टू द सेकेंड ईयर दे विल आस्क यू टू जस्ट दे विल जस्ट असाइन यू सम टास्क लाइक इतने पेशेंट्स हैं, इनको इतनी मेडिकेशंस देनी है, एंड देन यू हैव टू गिव ऑल दीज मेडिकेशंस टू देम. No matter what are you feeling, no matter what are the things are, sometimes they'll just forget to mention it that the patient is having HIV or the patient is suffering from TB, and you have to find it on your own, and if you don't, you will be risking your own life. That is the thing that used to happen a lot of time, and that was the thing that has started pinching into my mind, like what is happening here. Means they are making you work for them, but they are still not very interested to tell you that these things can be dangerous to you. You should be very precautious when you are injecting the injections, or when you are just doing the medicine administration. So yeah, sorry for the fumble in words. I have not used it from a very long time, so that's why it is happening. But this was the scenario. After that, what you will see is this is the scenario that will be happening from the starting to the end, and that's the same thing that you will face. Slowly what you will see is ki the knowledge perspective will go down in the clinical sides, and the hard work or the physical work will be more. So means it totally depends on you. If you like you just want to learn how the things are, how the medicines are administered, even if you don't know what the work they do or what is the disease the person is suffering from, or why, or you don't have that question like why this patient is given that medication, or what are the things, what are the reasons behind it, why the symptoms are getting controlled, why they are not, and things like that. So if you don't have any questions like this in your mind, it's all good for you. Means you can do it very well, everything will be well for you. You just do the med making in the starting. You just note the things like temperature, pulse rate, breathing rate, everything like that. TPR it is called. I'm just forgetting the names slowly. फिर उसके बाद recall हो रहा है.
So yeah, these were the things that they'll ask you. First year mein it will be okay, you'll see, like you will feel like slowly when the juniors will come, the next batch, they'll be doing the bed making procedure and you will be shifting to a next thing. Many positive things were also there, like we used to be on the surgery wards, we used to be on medicine emergency wards, where means there are a lot of serious patients, where you'll get to know what are the things that are required in emergency conditions, what are the medications they take, what are the things that you should keep in mind. So there are positive perspectives.